Hello everyone, good afternoon. Okay, let's continue with the session today. So in the last class, what we have seen, we have completed like what is exactly meaning of parameter passing. How we can pass a parameter, guys? We can pass a parameter at compile time as well as at run time. Okay, so yesterday we have covered only compile time part, correct? So how we can simple, pass a parameter to the method. Playing music. Okay, just be on mute. Okay, we have already covered the difference between call by value and call by reference. We have seen that, okay, what is exactly call by value? So whenever you are calling any method by passing any value, then that becomes call by value, okay? Whatever you can simply pass, let's say, if you are calling any method by passing any reference of a class, then that concept is called call by reference, okay? So parameter passing, it is very important just to make a code dynamic, okay? So guys, we have also covered return keyword use. What is the purpose of return keyword? If you want to return anything from the method, then only you can follow what? Return keyword. So that data can be any type. Please remember that data can be of any type. So you can return any information, है ना? So you can return any data, any information. That can be string, that can be, I can say, any integer value. You can return any value. So if you want to return anything from the method, then only you can use return keyword. Then guys, yesterday we have covered the method chaining concept, how you can call one method from another method, that we have also covered. And we have covered builder pattern also. If you want to implement any method in the form of object, how we can write a logic for that, correct? So today I will be starting with next topic, that is how we can simply accept input from user. जावा में अगर आपको इनपुट एक्सेप्ट करना है, हाउ टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर, तो आप कैसे करोगे? इफ यू वांट टू accept something, data, any number, anything from the user, then what are the ways are available? Let me tell you the most popular way that you can follow, that is called scanner class. In Java, one more special class is available, that is called scanner class. You can directly follow the scanner class, and this is recommended by Java only. But before scanner, there was two different method also available. Okay, example, जैसे आप यूज करते हो ना system.out.println just to print something on a console, वैसे ही एक मेथड आप यूज कर सकते हो system.in. In system.in is input stream. It will read data, okay, accept the data. So system.in dot, there is a one more method available, that is called read method, okay? You can use this method. But yes, what happened, you know, whenever you are going to use this method has one limitation. This method reads only single byte. It reads single byte in character. मतलब जो भी डेटा रीड होगा as a character data read होगा, and this data will return you integer value. Okay, what it will return? It will return you integer value. So Java says that if you want to read a complete data, don't follow this method, because this will help you to only read a single information, not the complete data or not the complete number. It can be anything. Okay, so let me show you how this method is actually we can follow. And yes, obviously हमें इसको follow करना नहीं है, but I just want to show you कि what are the different ways are available in Java to read the input from the user. Okay, and why to follow scanner. So this is a runtime parameter passing. I'm explaining to you. Okay, so let me give a name of a class, runtime parameter passing. Okay, see, runtime parameter passing. Okay, and let me take a main function. As I told you, scanner हमें follow करना है, but before scanner there was one technique available in Java. But let's understand the first limitation of that particular technique. So this is the first technique I can say. So let me just write, this is the technique 1. Okay, this is the technique 1. And see, suppose I'm just writing a simple message. Okay, consider enter. मुझे बस यूजर को एक मैसेज देना है, enter your phone number. Fine, enter your phone number. See, okay. So obviously after this message, user should enter a phone number now, correct?
बट ये हमें कहाँ पे एंटर करना है गाइस, रन टाइम पे। तो हम लोग कंपाइल टाइम पे कोई कोड नहीं लिखेंगे, राइट? वी हैव टू एक्सेप्ट डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर। सो वॉट एवर नंबर विल बी देयर, यूजर विल ऐड दैट नंबर, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। कैसे एक्सेप्ट करोगे? तो यहाँ पे अप्लाई करो मेथड system dot in. This is the input stream, standard input stream guys. This stream is already used to what I can say, to accept data from the user. तो system dot in के पास एक method available है, that method is called read method. But this read method has a limitation. It will read only one single byte information guys, in the form of character. And see what is the return type of this, integer type. Okay, so if I follow read method, ये मुझे क्या करेगा, it will simply return me the integer. Fine, but once you apply this, it will throw one exception. Let's see. It is saying that unhandled exception type IO exception, input output exception it will throw. So what is exception, how to handle it, we will see later. अभी के लिए अगर आपको इस वजह से कुछ मैसेज आ रहा है, okay fine, unhandled exception, you just need to throw it. Just use this first option, use, and you can simple throw that IO exception. Done. Okay, so whatever data you will pass, it will read, and then it will pass to this number, correct? Okay, and then I should print that number. Fine, तो user का phone number हम यहाँ पे print करेंगे. Let's see. If I execute this code, what is the result? Okay, it is asking you enter your phone number. Let me write my phone number. Suppose I'm writing here. Okay, one more time. See, 9552671595. Done. तो what we are expecting guys, ये सेम फोन नंबर कहाँ पे सेव होगा, नम नाम के वेरिएबल में, बिकॉज यहाँ से आपने डेटा पास किया है, ये डेटा सेव होगा लाइन नंबर 11 पे नंबर में, है ना? एंड देन लाइन नंबर 12 का रिजल्ट आपको मिलेगा नम. सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, it should print complete number, no? But let's see, if you are printing what it is printing 57, ये 57 क्या है? What is a 57? तो is this your number? No, मैंने तो नंबर लिखा है complete number 9552671595. So why I'm getting 57? ना ही ये addition है. तो what is happening internally, क्या exactly हो रहा है वो understand करो. Whenever you are passing any number, okay, जैसे कि मैंने ये number pass किया, what this read method will do, it will read only single byte. मतलब इसने बस एक ही byte को read किया है, nothing but what, 9. okay, 9 को read किया है in the form of character. तो 9 as a character इसने read किया. अब जब ये return करेगा character का integer, तो what the value you will be able to see, 9 number का ASCII value आपको मिलेगा ना everybody? Do you remember? कैरेक्टर टू इंटीजर अगर आप लोग कन्वर्जन करोगे तो कैरेक्टर वैल्यू का ASCII वैल्यू आपको मिलता है ना रिटर्न में. सो सेम थिंग हैपेंस हियर. तो 9 का ASCII क्या मिल रहा है आपको, 57. लेट्स सी वन मोर टाइम, आई एम एग्जीक्यूटिंग द कोड. सी, रन एज जावा एप्लीकेशन. मैंने सिंपल यहाँ पे डिफाइन किया. ओके फाइन, मुझे 8 डिफाइन करना है. तो व्हाट द आंसर यू विल बी एबल टू सी. अगर 9 का ASCII है 57, तो 8 का कितना होगा? Yes everyone, 56 ना. Let's see, got the ASCII. तो we haven't written any 56, मैंने तो 8 लिखा है, तो मुझे 56 मिल रहा है. तो there is a problem ना. तो if you want exact number, you have to do typecasting, correct ना? ये जो नंबर है इंटीजर ASCII है, मुझे फिर से इसको कन्वर्ट करना होगा कैरेक्टर में, तब जाके ये मुझे आंसर देगा. बट still is it you are able to see that complete number? See one more time, I'm writing number, okay, some random number this time. Still I'm getting what, only first number. अब मुझे same number क्यों मिला? Because मैंने character typecasting किया है character में. Everybody clear now? So I'm able to see only first number or first digit. I will be not able to see the complete number, and that is the reason we don't follow this read method. तो technique 1 में क्या problem है? This read will read the input, okay, in the form of only single character, and it will return you what, it's ASCII. So we are not going to follow this technique 1 to read the entire data from the user now, because आपने notice किया कि ना ही आप complete number को read कर सकते हो. At least what you can do, you can read only single data or single digit, single character. मतलब tomorrow अगर मैंने कोई string भी pass किया, तो मुझे बस उसका character return होगा, only single character. I will be not able to see the complete name. Right now, so what is a better approach? We can't follow read method now. Okay,
देन जावा में एक और मेथड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. That method still people use for the other, I can say, the development part. So that is called buffer reader class. Okay, there is one buffer reader class available in Java to read the input from the user. Yeah, this technique also you can use, but you know, if you are using this technique you need to write so many statements, because let me show you कि आप कैसे कोड लिखोगे. See, first of all आपको ये क्लास को डिक्लेयर करना है. So it is buffered, I will say buffered reader, this is a class name, suppose br new class है directly, तो इसको define करो. Again buffer, I can say reader. Okay, and then in the constructor, okay, you have to pass here input stream reader. So guys, let me first import this class from java.io. Okay, so you are just going to write buffer reader, इसको import करो. And here before this, okay, we are going to write one more statement, input stream reader. Okay, this is one more class, and you are just going to write ir is equal to new. Again you can write input stream reader. Let's see. Fine. And then in this input stream reader constructor you can use system.in input stream, system.in input stream. Okay, now let me import this class also from java.io package. Now what I have to do, in the constructor of buffer reader we have to pass this ir. Okay, reference variable. See, though call by reference we are doing here, right? We are just calling this constructor by passing some reference. कोई दूसरे class का reference हम यहाँ पे pass कर रहे हैं, right now? Okay, and then what you can do, see, I'm providing one message to the user. Okay, fine, enter what, let's say enter your phone number one more time. Okay, let's see, enter your phone number. Obviously user will enter their phone number, correct ना? Okay, तो जो भी phone number है उसको accept करना है, तो we can use here one more interesting method. br dot one method is available, that method is called read line method. Okay, this read line method, if you observe read method, तो ये read method अभी हमने follow किया था, it read a single character, remember? तो we can't follow ना, फोन नंबर है मतलब टोटल 10 डिजिट फोन नंबर यू जस्ट नीड टू रीड, तो हम सिंगल कैरेक्टर को रीड करके क्या करेंगे, राइट? तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज रीड, वी आर गोइंग टू यूज दिस रीड लाइन. सो व्हाट द रीड लाइन विल डू, whatever number you are going to write, it will return you in which form, it will return you in a string form. So guys, do you remember, अगर रीड लाइन ये मेथड मैंने फॉलो किया तो ये मुझे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग डेटा. मेरा नंबर कैसे मिलेगा मुझे, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. So how to convert from string to integer? Do you remember one concept I have explained to you? अगर आपको object to primitive में convert करना है, कैसे करोगे? Which concept you are going to use it here? Parsing. Very good. Parsing. That means what? I can say wrapper class concept. Very good. Wrapper class concept we are going to use now. Object to primitive conversion करना है तो we can use wrapper class. मतलब अब अगर इस डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, आई विल बी यूजिंग हियर इंटीजर रैपर क्लास. इंटीजर डॉट विच मेथड, parseInt मेथड, वेयर यू कैन पास अ स्ट्रिंग एंड दिस मेथड विल रिटर्न यू इंटीजर वैल्यू. सो दिस टाइम आई विल बी राइटिंग इंटीजर नंबर, है ना? एंड फाइनली उस नंबर को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. डन? ओके, लेट्स सी. So many statements, conversion, every time you need to follow and then only you are able to see the correct answer. Example, one more time, I'm writing some random number. Okay, see. Same number you are able to see ना? तो जो नंबर आपने पास किया वही नंबर आपको प्रिंट हो रहा है. तो this is what? This is the way that you can accept the data from the user. But guys, every time if you are following buffer reader, these are the statements you need to simple write every time. So this is very lengthy code, correct now? So Java says that, okay, Java provides you one more way, okay, that is called scanner class. Instead of using this buffer reader, there is a one more beautiful way we have, that is called scanner class. तो आपको buffer reader technique भी follow करना नहीं है, correct ना? So what technique we can follow? We can follow scanner class, which will help you to accept the data. Whatever data will be, that can be character, that can be string, that can be number, any type data you can accept and you can read easily. Okay, so let me show you what you are going to do. You are just going to declare directly scanner.
scanner, any reference variable name is equal to new, again scanner. And in the constructor of the scanner class, you just need to declare system.in. This is called what? Input stream. Without this stream, you can't read any data from the user. Let me explain. Buffer reader class coming from the java.io package, right? All the input stream reader, IO, everything coming from the java.io. But scanner class is simply coming from the java.util package. Okay, so you just need to simply use it. Import karo java.util se. Here, I will be passing again a message to the user. Let's say enter number or enter phone number, whatever it is. And अब हम क्या करेंगे? So you are just expecting number from the user. So here, for every primitive type, we have a separate method which start with next prefix. तो आपको बस लिखना है sc dot next and see what type of data you are expecting. Integer type, because ये number है. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, नेक्स्ट इंट मेथड. दिस मेथड विल रिटर्न यू इंटीजर डेटा. देखो नेक्स्ट लाइन इट विल रिटर्न यू स्ट्रिंग डेटा, नेक्स्ट लॉन्ग इट विल रिटर्न यू लॉन्ग डेटा. If you want to follow float, double, you can simply have this method, next double, next float. If you observe, so for boolean, byte, double, float, integer, string, everything, okay, we have a separate method, but we don't have a method for a character. Why it is so, I will explain. Okay, तो आप लोग कैरेक्टर को रीड कैसे करोगे यूजिंग स्कैनर, दैट पार्ट आल्सो आई विल बी कवरिंग, सो डोंट वरी. अभी के लिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो. तो अब मुझे एक्सेप्ट करना है इंटीजर वैल्यू, सो आई विल बी यूजिंग नेक्स्ट इंट मेथड. नेक्स्ट इंट विल रिटर्न यू व्हाट? इट विल रिटर्न यू इंटीजर नंबर. यस, so this time I can print number, and yes, I can print that value. Okay, now see what is the result. Yeah, and one more time. So whenever you are using SC scanner class, so देखो एक warning आ रहा है ना, line number 49 getting some yellow color warning. So what it says that Java says that resource leak SC is never closed. Generally, what is resource leak problem? Resource leak problem का मतलब होता है memory leak issue. Okay, sometimes कई डेटा के लिए वेरिएबल्स के लिए मेमोरी अलोकेट होता है, बट अगर मेमोरी रिलीज नहीं किया तो देयर इज अ मेमोरी लीक इशू. ओके, सो यू हैव टू, आफ्टर यूटिलाइजिंग दैट मेमोरी, वंस द टास्क इज कंप्लीट, यू हैव टू रिलीज दैट मेमोरी. तो जब कोड कंप्लीट होगा तो स्कैनर क्लास में एक ही काम करो, sc.close मेथड को यूज करो, दैट्स इट. तो दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक टू रीड अ डेटा फ्रॉम द यूजर. तो एग्जांपल, if I'm executing the same, see enter number, whatever number you are passing, okay, same number you will get in the result. Everybody clear? तो अगर नंबर को एक्सेप्ट करना है in this way, you can write a logic. What if tomorrow you are just going to accept any kind of, I can say a name, okay, कोई string information accept करना है, क्या करोगे? How you are going to write a logic? चलो मुझे क्या करना है, after number I just want to accept some string information also. So let me write here, okay, let's say enter your name. Done. अब जब name user enter करेगा तो we should accept the name, correct? So what I'm going to do, I will be accepting the name. Again sc dot name मतलब complete string guys. तो complete string को follow करना है तो we have a direct method, next line method. Follow next line method जो आपको return करेगा, you know, string information. तो I will be saying okay fine, this is the string name. Done. And फिर हम क्या करेंगे, finally we can print it here. Okay, so the number and particular name. Let's see whether it is working. So one more time I'm executing the logic. Okay, enter number, suppose I'm writing 78 and enter your name. So it is not directly, okay, it is not asking me to write a data. Okay fine, let's do one thing, ये थोड़ा sequence में करते हैं. So I will be writing here first name, okay, enter your name and enter your number. So let me take this string line function, okay, next line function here. First I will be writing name, then I will be writing this number. Okay, so we don't require this statement now. Fine. तो देखो मैंने क्या लिखा है, enter your name, तो पहले name को accept करोगे, enter number, number को accept करोगे, and finally name and number को print करो. So I will be writing here after name I will be printing this number. Let's see now this time it is printing or not. So 2 time properly arrange karo, you will get a result. See, enter a name, suppose I'm writing here a name, fine. Enter a number, this time I'm writing any number, and see I'm getting the same result.
Everybody clear? So जो डेटा आप पास करोगे in the same flow you will be able to see the data. Okay, जैसे आपने कोड लिखा है वैसे ही डेटा क्या होगा, रीड होगा, एक्सेप्ट होगा and you are able to print it. So क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? How to read information or any data from the user? So this is the way. Scanner class it is a way to read a data. So if you want to follow runtime parameter passing, then we can use scanner class. What is scanner class? See, scanner class, it is found in the java.util package. It read the input from the system and parse the same. Internally parsing होता है, right? जैसे बाकी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आपको टाइप कास्टिंग करना नहीं पड़ेगा. It will perform everything internally. So it will accept the data from the user in a primitive type, and by using next method, it will parse the same and it will return the value, okay, of the same type. So for every primitive, you have a separate function which start with the next prefix, okay. So to get instance of a Java scanner which read input from the user, we need to pass input string, matlab system.in in the constructor of scanner class. So this is a signature that you have to follow every time. अगर कोई भी डिटेल आपको यूजर से रीड करना है तो यू आर गोइंग टू राइट इन दिस वे, स्कैनर sc is equal to new scanner and system.in you are going to pass inside a constructor. So is this point clear to everybody? What is the scanner class, how it will work? It's very simple. For every type you have a separate method, so just follow the method and you can just access that particular data from the user. So example, this is the first कोड दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि कैसे आप लोग यूजर से नेम को एक्सेप्ट करोगे एंड डिस्प्ले करोगे सेम नेम, राइट? तो वी कैन रीड अ डेटा, वी कैन प्रिंट द सेम. चलो लेट्स राइट अ कोड फॉर दिस. सेकंड कोड और सेकंड प्रोग्राम. Create a simple program to accept two number from the user and display the addition of the same. तो I will be showing you same code in two ways. एक तो हम नॉर्मल कोड करेंगे जिसमें आपको डायरेक्टली डेटा को रीड करना है, परफॉर्म करना है एडिशन. So directly everything we are going to write within a main function, है ना, जैसे अभी हमने किया. But let me show you another concept. Suppose I'm creating one add function, fine, and whatever data I'm accepting in this main, I have to pass that data to my function. तो ये क्या होगा? Runtime data passing, runtime parameter passing. Okay, so this is the concept that we are going to learn, how to perform runtime parameter passing. So let's understand same logic, okay, with two different, I can say, views or two different techniques. So I will be taking one more separate class. देखो, so this is a scanner class, again scanner demo, fine. Okay, तो first technique जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं ना. First we will ask a user to enter a number. Example आप ऐसे लिखो, enter how many number? 2 numbers. So enter 2 number, fine, okay. Then अब यूजर जब एंटर करेगा तो 2 नंबर से एंटर करेगा, बिकॉज आपने मैसेज में लिखा है एंटर 2 numbers. Either you can write in this way, enter first number, enter second number, and then you can print the addition. That is also okay. But I'm writing direct code, enter 2 numbers, okay. तो 2 नंबर यूजर को अभी सिंपल कोई वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आई विल बी यूजिंग sc डॉट व्हाट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर स्कैनर, है ना, स्कैनर sc is equal to new, and then again scanner. Inside a particular constructor we are going to pass what? System.in. अभी ये अगर डिक्लेयर करोगे तभी डेटा को रीड कर सकते हो ना? Yes. And what is a process to read a data? Just use a method sc dot next int method. Why? Because you are going to accept integer value. So this is your first number, correct? So what I'm going to do, I will be writing, okay, fine, integer, this is number 1. Done? Yes. Now guys, user will enter another number also. So let's accept that number. sc dot next int. Fine. Next int return करेगा integer. So let's declare integer number 2. And then what you can do, अगर आपको directly addition करना है तो there is a solution ना. Direct लिखो addition is, and then you can write here what? Inside a bracket number 1 plus number 2. Correct? And finally, once the memory is complete or utilized, you can just close the scanner. Okay. So we will free the scanner class and see this result. So very first you will get, okay, fine, enter 2 numbers. Suppose I'm writing 100, I'm writing 400. ठीक है, देखो addition is 500. Got the concept?
डायरेक्टली मेन फंक्शन में लिखना है तो इस वजह से लिखोगे, otherwise what you can do, see I can create another function also. Okay, example public void, let's say add, fine, and inside this add function I am just going to pass two number, integer a comma integer b, done. And here either you can print or you can return the output, it's up to you. So example addition from function, okay, is, addition from function is, and then here I am going to print that addition. मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a plus b को print करेंगे. But obviously whatever data I am accepting from the user, I have to pass that data to the method ना. क्या करना पड़ेगा, method किसका है, class का है, तो you have to create object for this class, yes or no? You have to create object of this class. So suppose I am creating object first. Okay, scanner demo s1 is equal to new, again scanner demo constructor part. And what I can do after this, instead of printing the addition directly here, I can simply pass the data to the method. So I can call s1 dot add method, and what value I can pass? I can pass number 1, number 2. Everybody. So what are these parameters? क्या ये compile time पे आपने data set किया है? No. This is what we are calling this method, or we are passing parameter at runtime. So parameter passing at runtime. कैसे किया आपने runtime parameter passing, समझ में आ रहा है? Because we are not going to set any data at compile time also. So data can be anything, है ना? It will be set, it will be passed by the user. तो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे एंड मेथड में पास करेंगे. सो इट बिकम्स रन टाइम पैरामीटर पासिंग. सो सी if you execute, suppose this time I'm writing okay 10 and 10, see addition from function is 20. तो आपका डेटा एक्सेप्ट हुआ, मेथड में पास हुआ, मेथड कॉल हुआ, मेथड के अंदर एडिशन हुआ, एंड देन यू आर एबल टू सी द रिजल्ट. तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाट इज मीन बाय रन टाइम पैरामीटर पासिंग और कंपाइल टाइम पैरामीटर पासिंग? कंपाइल टाइम मतलब क्या होता, अगर मैंने कोई मेथड क्रिएट किया है एंड आई एम पासिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम मेन फंक्शन, मैंने कोई डेटा सेट किया है तो वो कंपाइल टाइम डेटा होगा, है ना. रन टाइम मतलब क्या, यू आर रीडिंग और एक्सेप्टिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द कंसोल. जब प्रोग्राम को रन किया तब डेटा पास हुआ, तो इसको बोलते हैं रन टाइम पैरामीटर पासिंग. एवरीबडी, क्या ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक सबको क्लियर है? What is the purpose of scanner class? Why we generally follow scanner class and how to follow scanner class? Yes, everyone. Yes, ma'am. Okay. Now, what is the next topic? देखो, तो ये था आपका main concept, parameter passing, method, different types of method. Okay, the techniques to call the method, compile time and run time. And then parameter passing with return, without return, method chaining, builder pattern, so many things we have seen. Okay, let me explain one more. Suppose, chalo, directly let me write the code. See this. Let me take another demo. So I will be taking one more class. See this. Scanner, okay, scanner demo. Give some meaningful name, scanner demo 2. Already scanner demo नाम का class है, so I will be taking scanner demo 2. Fine. Yes. And here what I'm going to do, suppose I'm asking a user, okay, let's say simple message, I'm asking a user enter a character. ठीक है, enter a character. Fine. तो character के लिए let's see, again मुझे scanner को पहले declare करना होगा. Scanner sc is equal to new and again scanner. In the constructor we can write system.input string. But now if you observe, let me import scanner from java.util. Yes. Now if you observe, do we have any direct method to read a character, guys? See, next pattern में कोई भी direct method नहीं है. Next byte है, double है, float है, string है, long है, short है. But we don't have a direct method for character. So why it is so? देखो, usually क्या है ना? If you remember, we have learned about a string. What is string? Java में string it is a class. Okay, what is string? In Java, string it is a class. तो string में जब आप declare करते हो value,
ओके तो इस वजह से करते हो ना, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू सपोज हेलो। सो एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, स्ट्रिंग इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। सो अगर स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब इंटरनली स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट होगा, s1 will represent like this, okay, h e l l o, ठीक है। this is called array because collection of similar type of element we can declare in the form of array, okay। we haven't cover any array, so wait for some time, but पहले understand करो कि s1 अगर आप इस वे से लिखोगे तो इंटरनली मेमोरी में इस वे से क्रिएट होगा, ओके। अब h का पोजीशन क्या है, जनरली इन जावा इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट विद 0, फाइन, तो h का पोजीशन है 0, e का पोजीशन है 1, l का पोजीशन है 2, अगेन l 3, अगेन o 4। तो टोटल ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ कितना है, टोटल लेंथ इज 5। कैसे 5, 0 to 4 इज इक्वल टू 5, ओके। तो जावा में जब आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हो, दिस इज अ क्लास, दिस इज रेफर्ड एज रेफरेंस वेरिएबल, एंड ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट होता है, दिस इज टेक्निकली वी कॉल्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज टेक्निकली वी कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ओके। सो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो व्हाट द स्कैनर क्लास एंड व्हाट वी कैन सिंपल परफॉर्म, अगर कोई डेटा आप रीड करते हो, ठीक है, तो इन स्कैनर यू हैव टू रीड अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। If you want to read a character, तो पहले string में read करो, and then string to character you can convert your data। कैसे, तो guys string एक class है, string class के पास various methods है, तो there is one method available that is called character at method। You have to pass only index in that method, it will return you what, it will return you character data। मतलब अगर मैंने लिखा s1 dot character at, okay, कैरेक्टर एट 2, तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इट विल रिटर्न टू मी, कौन सा कैरेक्टर रिटर्न होगा, L। यस, 2 पोजीशन पे क्या है, L है, तो यू विल एबल टू सी L। सपोज मैंने पास किया, ओके फाइन, कैरेक्टर एट 0, तो विच कैरेक्टर इट विल रिटर्न टू यू, H। H। एवरीबडी क्लियर। सो ये क्या है, अगर आपको कैरेक्टर को रीड करना है तो व्हाई वी डोंट हैव अ डायरेक्ट मेथड, बिकॉज यू कैन रीड अ कैरेक्टर डायरेक्टली फ्रॉम अ स्ट्रिंग। सो अब हमारे केस में अगर हमें कैरेक्टर वाला वैल्यू सिंपल रीड करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाटएवर डेटा यूजर विल एंटर, उसको कैसे एक्सेप्ट करोगे, पहले एक्सेप्ट करो स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग के लिए विच फंक्शन, इन स्कैनर स्ट्रिंग के लिए कौन सा फंक्शन, नेक्स्ट लाइन फंक्शन, ओके। Do remember this, see, first I will read data in a form of string, so I will be writing what, next line function directly, जो मुझे रिटर्न करेगा string, करेक्ट। देखो ये मुझे रिटर्न करेगा string, so let's say string data, fine, and then from this string I can simple use a function ना, जैसे कि data dot what, see the function, everybody, अगर आपने बस डॉट ऑपरेटर दिया तो देखो इतने सारे string के functions है, these many functions we have for a string class, okay। तो we are going to learn functions in a string session only, but अभी के लिए observe करो, तो we have first function available here that is called character add। what is this function, it will return a character value at the specified index, मतलब जो भी index आप provide करोगे it will give you particular character from at that particular index, okay। suppose अब मुझे क्या करना है, whatever user will enter, वो अगर कैरेक्टर है तो उसका पोजीशन क्या होगा, हमेशा 0 पोजीशन ओनली, है ना। सो आई विल बी गिविंग हियर 0 ओनली, तो दिस मेथड रिटर्न्स मी व्हाट, दिस मेथड रिटर्न्स मी कैरेक्टर गाइस, क्लियर, एंड फाइनली आई कैन प्रिंट दैट कैरेक्टर, सी दिस, ओके। तो लेट मी शो यू वन मोर टाइम, सी sc डॉट क्लोज करो एंड देन एग्जीक्यूट करो स्क्रिप्ट को, देखो एंटर अ कैरेक्टर, मैसेज मिला, चलो मैं एंटर करती हूँ टी, ओके, सी व्हाट इट विल रिटर्न टू मी, सेम कैरेक्टर ना, क्लियर। तो पहले स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट किया है डेटा, मतलब वी हैव एक्सेप्टेड टी एज अ स्ट्रिंग एंड टी को हमने कन्वर्ट किया है कैरेक्टर में। सो नेक्स्ट लाइन मेथड आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, एंड फ्रॉम द स्ट्रिंग यू कैन एक्सेप्ट दिस कैरेक्टर एट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 2 स्टेटमेंट्स लाइक दिस,
कैन वी राइट इन दिस वे? सी sc डॉट नेक्स्ट लाइन जो मुझे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, तो फ्रॉम द सेम मेथड कैन आई डायरेक्टली एक्सेस कैरेक्टर एट, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, डू यू रिमेंबर? मेथड चेनिंग। नेक्स्ट लाइन से आपने दूसरा मेथड कॉल किया एंड अब ये लास्ट वाला मेथड क्या रिटर्न करेगा आपको? देखो यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर, कैरेक्टर एट मेथड विल रिटर्न यू कैरेक्टर, सो इसको डिक्लेयर करो कैरेक्टर C1 and now you are able to see the same result. See, so tomorrow if I pass any data, suppose मैंने लिखा hello, तो भी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? Whatever character is available at 0th index, it will return you only same ना? See, I am getting only H. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि अगर आपको कैरेक्टर को रीड करना है तो दिस इज द वे दैट यू कैन फॉलो? आइदर आप इस वे से लिखो नॉर्मल लॉजिक, ठीक है, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो फिर कैरेक्टर में करो, और बोथ मेथड्स, ओके, बोथ मेथड्स कमिंग फ्रॉम द सेम क्लास, तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, मेथड चेनिंग में भी लिख सकते हो. Everybody, it is clear how you can read a data from the user using scanner class.